मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपने इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being
critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States,
जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीवड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीवड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by
20th Century Fox on January 10, 2003. The film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलियड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलियड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलियड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company
Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Release date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $18 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Release date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $18 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Release date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $18 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Release date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $18 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed
couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill,
Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर
and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher,
Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक
comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer,
produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2018 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2018 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2018 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2018 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being
critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States,
जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by
20th Century Fox on January 10, 2003. The film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग न्यूलीड couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company
Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Released date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Released date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Released date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream. Third, Robert Stream. Simon Production. Distributed by 20th Century Fox. Released date January 10, 2003. Running time 95 minutes. Country United States. जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed
couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill,
Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी एज ए यंग newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned। आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर
and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, released date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, Germany, language English, budget $18 million, बॉक्स ऑफिस $101.6 million. तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक comedy film directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, and stars Ashton Kutcher and Brittany Murphy as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starting Ashton Kutcher,
Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जस्ट मैरिड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। जस्ट मैरिड इज ए 2010 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शॉन लेवी, रिटन बाय सैम हार्मर एंड स्टार्स एस्टन कुचर एंड ब्रिटेनी मर्फी as a young newlywed couple from different social classes who take their honeymoon to Europe, where obstacles challenge their ability to sustain in marriage. Released by 20th Century Fox on January 10, 2003, the film was successful at the box office despite being critically panned. आइए इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Sean Levy, written by Sam Harmer, produced by Robert Simmons, Lauren Sulder Donner, starring Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, cinematography Jonathan Brown, edited by Scott Hill, Don Zimmerman, music by Christopher Beach, production company Media Stream, third Robert Stream, Simon Production, distributed by 20th Century Fox, release date January 10, 2003, running time 95 minutes, country United States, जर्मनी, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $18 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $101.6 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू का हिस्सा करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।